Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another program of Kids Time, and here we are with the children from Kids Time to learn together and to teach the viewers all over the world some more information and some more Islamic knowledge. क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? सर्दियाँ कैसी जा रही है? एहतियात करते हो आप लोग? गर्म कपड़े पहनते हो? है ना? पहनने चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या होता है एंड में? जी हम आप बीमार हो जाते हो, तो इसलिए सर्दियाँ आ गई है, अभी एहतियात करनी शुरू कर दो, अच्छे गर्म कपड़े पहनो, ठीक है? और अम्मी अब्बू को तंग नहीं करो, गर्म कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना? कुछ बच्चे कहते हैं ना नहीं पहनने, सो अगर आप नहीं पहनोगे तो आप खुद ही बीमार हो जाओगे। शुरू करें आज का प्रोग्राम? चलो, आज की दुआ कौन सुनाएगा? फरीद। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन Samita. In the name of Allah, because alluring, my Lord surely is forgiving, merciful. Urdu translation. Isra. अल्लाह के नाम के साथ ही इसका चलना और इसका लंगर अंदाज होना है। यकीनन मेरा रब बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। जी, आज जो दुआ थी वो सवारी करने की दुआ थी, तो क्या समझ आए आपको इस बारे में? सजीला। इसका ये मतलब है कि जब अल्लाह जब हमारा सफ़र शुरू हो तो वो ठीक तरह हो, और अगर कोई परेशानी हो तो वो अल्लाह सोल्व कर दे। जी, that's a very good explanation. That if when you're going on a journey, you say this prayer to ask Allah for His protection during the journey, so that you get to where you want to go safely. जी, लंगर अंदाज होना क्या होता है? वर्षा। जैसे जब रुकते हैं, जब सवारी कर रहे होते हैं। जी, जब आप किसी जगह पे रुकते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के नाम के साथ, और जहाँ आप रुकते हैं हर चीज़ में खुदा ताला की मदद मांगी गई है इस दुआ में। हम क्यों मांगते हैं दुआ? हर चीज़ शुरू होने से पहले, है ना? क्यों मांगनी चाहिए दुआ? आपको दुआ पढ़नी चाहिए हर चीज़ से पहले, ताकि आपका काम गलत ना हो। जी, अल्लाह ताला के हाथ में तो सब कुछ है ना, तो अल्लाह में आपका दोस्त है, और अगर आप अपने दोस्त को अपने साथ रखोगे और वो आपका ख्याल रखेगा, तो है ना, हम इसलिए दुआ रख कर मांगते हैं ताकि हमारा दोस्त हमारे साथ रहे और हमें हर परेशानी से बचा ले, ठीक है? We always, whenever we're starting anything, whenever we're doing anything, we always ask Allah's help and protection everything we do, because we know that it's only Allah that helps us, that looks after us, that takes care of us, and so it's Allah that we always ask for help and protection. This prayer is a special prayer, and it was said by Prophet Noah, and some of you might have heard in English they use the word Noah's Ark, where Prophet Noah built a big ship to protect the people from a great flood. And when he was on this ship or this ark, this is the prayer he said. So he said, in the name of Allah, be its course and its mooring. So let the ship go in a proper way and let it stop in a safe place. And then he reminded everybody by saying, my Lord is assuredly most forgiving, merciful. So Allah is the one that is the most forgiving, that forgives everything that we do wrong, because everybody does wrong things. And He's the most merciful, so always forgives us and helps us. जी, जैसा कि शायद बाजी ने बताया कि ये दुआ जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी और उसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो सवार किया था, क्योंकि तूफ़ान आने वाला था। उनको जब तूफ़ान की इत्ला मिली, ख़बर मिली, न्यूज़ मिली, तो उन्होंने जो है एक कश्ती तैयार की और उसमें सवार होने से पहले उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। सो आप जब भी किसी भी चीज़ का सफ़र करें, चाहे जहाज़ का करें, चाहे साइकिल का करें, चाहे गाड़ी का करें,
तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आज की हदीस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस दानियाल। इन्ना औला अन्नासी बिल्लाहि मन बदाहुम बिस्सलाम। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन Abdul। Allah prefers those who hasten to be the first to greet others, saying Assalamu alaikum. So those people who, Allah prefers those people that are the first to say Assalamu alaikum. Or the translation, Zoha। लोगों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो इस्लाम करने में पहल करे। जी, आप लोग करते हो इस्लाम पहले? क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम। जी। And when we're saying Assalamu alaikum, it's much nicer to say that than to say hello, because when you say hello, it doesn't actually really mean anything. When you're saying Assalamu alaikum, what are you saying? What does it mean? Hassan. Peace be upon you. Yeah, so you're basically saying to them is have a peaceful, nice day, and you're giving them a prayer. You're praying for them, saying, "May the peace and blessings of Allah be upon you." So it's a really nice thing to say to somebody. It's saying, "Have a nice day, have a peaceful day," and you're praying for them to say that nothing bad happens to them. That has much more meaning. It's much more nice to say that than to say something that doesn't mean anything at all. आपने कभी सुना है लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कभी बहुत सारे लोग पूरा अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं। जी अमतुल, आप बताएं कि आज अमतुल हमें बताएगी कि जब हम ऐसे किसी के ऊपर सलाम भेजते हैं तो उसका असल में क्या मतलब होता है। जी अमतुल। In my last class, our secretary Nasra told us that how some people say Assalamu alaikum wrong. Some people just say Assalamualaikum, which means you may be destroyed, and some other people say Assalamualaikum, which means you may die. But none of them are right. You're supposed to say Assalamu alaikum, which means peace be upon you. So can you see, by changing it very, very, very slightly, rather than bringing peace to somebody, you're saying that they should be destroyed. So you've got to think really carefully about what you're saying and how you say things. So that's why it's really important that we say Assalamu alaikum and we think about what we're saying, because some people, when they're saying it so quickly that they're not thinking about the words they are saying. When I get home and there's nobody home, I still say Assalamu alaikum. But then because there's nobody home, why do we still need to say it? Well, firstly, because you don't always know that there's nobody home. There might be somebody might have come home before you that you don't know of. And also, you can say Assalamu alaikum to the angels. और इसके अलावा आपको पता है जब हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो ऊंची आवाज़ में कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। And we follow that's what Adyabadi was saying, is that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh when he entered his home, whether there was anyone there or not, and we follow his actions and what he used to do. Yes, I've got two things to say. One is that it's an act of virtue, and also if you're saying Assalamu alaikum to someone, is it better to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh or just Assalamu alaikum? It's better to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, because what does that mean? Assalamu alaikum means may peace be upon you, peace and blessings of Allah. Rahmatullah, what does that mean? Rahmat, so Allah's mercy.
wa barakatuhu means and Allah's blessings. So isn't it better to say the whole thing, which means you're asking for Allah's blessings on that person and His mercy, not just peace? Yes. My mum told me if you say Assalamu alaikum, you get 25% of blessings. If you say Assalamu alaikum wa rahmah, you get 75, and if you say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, you get 100%. Yeah, so it's better to say the whole thing. जी जी वर्षा. Once somebody asked Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that when two people meet, who should say Assalamu alaikum first, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied that the one who is closest to Allah, and this means that if you want to try and get close to Allah, you should always say Assalamu alaikum first. Yeah, that's nice. Good. और अब बारी है जनरल नॉलेज की कि आप पब्लिक में कैसे बिहेव करना चाहिए. This is a really, really important issue that we're going to talk about today, and it's how we behave in public, how we behave with other people. When we're in public, when we're in front of other people, when we're in front of strangers, of course when we're in front of people we know as well, you are representatives of the jama'at. Okay? You are representatives of being Ahmadi Muslim children. Okay? So you have to be the best behaved, and we've talked about this before as well. You have to be the most best behaved children, because you are the examples to others. You are the examples to your teachers. So the teachers can look around the class and say, I know that person is it must be Ahmadi, must be an Ahmadi Muslim, because they are the best behaved. All right, so who can give us some examples of how we should behave when we're in public? Good, lots of hands up. Let's take Mudabbir. Do not gather with friends or family in the streets in a standing or sitting position. Why not? Because you can stop other people from behind. From passing. So if you gather in big groups, then people can't get to but beside you, they can't pass you, and people coming from the opposite direction can't get past you. And in London, on the tubes and on the escalators, there's always a sign which says stand on the right and walk down on the left, so that if you're standing, then stay on one side so that you can let the people pass beside you. Isha. If there's something in front of you, move it out of the way, because it might cause harm to other people passing by. Yeah, like what? What kind of things would you move out the way? Something maybe like, say if there's a stick or something in front of you, maybe someone might not see it and they might hurt themselves. They might trip over and hurt themselves. Yeah, that's really good. And also if there's rubbish on the street that it's safe for you to pick up, then you can move that out the way as well. Okay, yes. When you're going uphill, recite Allah is great, Allahu Akbar. When you're going downhill, recite Subhanallah, Allah is pure. Good. जी अब्दुल. You shouldn't carry like a harmful weapon with you. So like an umbrella. If you need to hold something else, you could just put it on your shoulder or something, and somebody might not see it, and it could hit them. Yeah. So if you're carrying something like an umbrella or a big umbrella, you should hold it downwards, especially because you don't want it hurting somebody as they're passing. Excellent. Good. Sajila. You should always salute other people who are passing by. By salute, I mean saying Assalamu alaikum. Yeah, जी. that's right. Isra. The people that are in vehicles need to say Assalamu alaikum to the passengers first. The people that are on the pavements. And if there is a smaller group and a bigger group, the smaller group needs to salute the bigger group first. एक और बात, अक्सर बच्चे जो है वो खाना खाते हैं रास्ते में चलते हुए, घर से निकल रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो हाथ में पकड़ लिया और खाते हुए जा रहे होते हैं, या बाहर से अगर आप कुछ लेते हैं तो खाते हुए जाते हैं. अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? आयजा.
because it maybe if you're running or if you're walking fast, if you're eating, you might get your food stuck in your throat and you might choke. And that's the reason you shouldn't, when you're walking, you shouldn't be eating as you're walking. It's actually quite bad manners as well. When we're eating, we should be sitting down, we should be calm, we should not be rushing about all over the place. Because as Isa said, we don't want food to get stuck and we don't want to have that feeling of choking. And that's why we sit down and we eat calmly before we go somewhere. Yes, Brina. Also, if someone asks you directions, you should tell them and answer them in a polite way. Yeah, so if somebody asks you for directions and you know where they want to go and you know how to get there, then you can explain that to them. और ये भी एक नेकी है कि छोटी-छोटी बातें जो हैं वो आप भी नेकियां इकट्ठी कर रहे होते हो. ये था हमारा जनरल नॉलेज. आज बच्चों ने कुछ शेयर करना है हमारे साथ. जी अमतुल, आपने क्या दिखाना है? I made these 2 hair clips. First I got some felt and then I just cut a rectangle out of it and put 3 creases in the middle and just sewed it together. Then I got another strip of the felt and put it where the thread was, because otherwise it would show and it wouldn't look that nice. And I just put a pin at the back. Gee. And then I also made some lip gloss which smells of vanilla. And I made it by putting Vaseline in here with eyeshadow and vanilla extract, and then I just put it in the freezer for 30 minutes. Well done. Varisha. मैंने ये एक बुक मार्क बनाया था. इसके मैंने सो किया था. इसके ऊपर मैंने अपने इनिशियल्स किए थे और इधर मैंने थोड़े फूल बना के और इधर मैंने बॉर्डर भी बनाया था. जी. Brina? For the regional Ijtima, there were Nasat contests of art and crafts, and for 10 to 12 there was to make a mosaic of Allah, and I made this, and in the regional I came 3rd, but in the national I didn't come anything. Good, well done. Okay, हमजा ने आज जोक सुनाना है. जी हमजा. हमजा को तो पहले से ही हंसी आ रही है. Well, I've got a joke about wasps, and it starts with where. Where do wasps go when they're sick? The waspital. The hospital, very funny. Fareed. Have you got your bugs now? What do you call a lonely banana? The answer's in Urdu. A lonely banana. Fareed. Saqib. Akela. That's a good one. I like that. Okay, और Anyone else? मुदब्बिर. यह क्या है? थोड़ी सी हल्दी पूरे घर में मिलती. अमसल. Light. लाइट, वो जो बल्ब होता है ना, उसकी येलो कलर की लाइट होती है. तो ओके. आयजा. I've got a riddle. You're locked in a room and there's no window and there's no door. There's a door which is locked, which you can't break open. There's only a bed in the room and a calendar. What will you eat and drink? Barira. The dates from the calendar and the springs from the bed. The dates from the calendar and the springs from the bed. I like that. That's a good one. Okay. आज मैं आपको ऐसे ही, जैसे अमतुल ने कुछ दिखाया आपको, कुछ पेन्स वगैरह ऐसे की चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं. आप घर में भी अपनी बना सकते हैं 50 के आप, और अपनी पसंद के अपने कपड़ों के साथ आप मैच करके बना सकते हैं. तो आज ऐसे ही मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ पेन्स बनाना, हेयर पेन्स. मोस्टली लड़कियों के लिए ये है, लेकिन बहुत सारे भाई भी अपनी बहनों के लिए बना सकते हैं.
ये हैंडमेड हैं, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। आप अपने ड्रेसेस के साथ जो है वो मैचिंग कर सकते हैं, और बजाय इसके कि आप बाज़ार से एक्सपेंसिव लें, आप घर में आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे पीसेस घर में पड़े होते हैं, अम्मी जो कपड़े बनाती हैं उनमें से बच जाते हैं। ये बहुत आसान है। इनमें से एक जो है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी सिखाती हूँ। कोई भी कपड़ा ले लें। वैसे ये वाला जो पिन है स्पेशली फैंसी कपड़ों की जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है, तो वो ऐसे के कॉटन मटेरियल में जो है वो लेके बना सकते हैं। आप कोई भी पीस ऐसे लो और आपने उसका सर्कल काटना है। आप पहले से पेंसिल के साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। You'll probably need to draw your circle first, because if you try and cut it out, you'll end up probably a wiggly circle. मैं इसका ड्रॉ किए बगैर एक सर्कल काटने लगी हूँ। Let's see if Adibaj you can do a proper circle without having drawn it. Yep, she has. Okay. अब हमने एक सुई धागा लेना, निडल, और ये इसको ऐसे स्टिच करते जाना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऐसे आपने ऐसे इसको फोल्ड करते जाना है, और साथ साथ इसको ऐसे सीधे जाना है। Some of you are very good at sewing, aren't you? हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं जो जैसे सजीला ने बैग बनाया था, आज अमतुल पिन्स बना कर लेकर आई है। आप लोग घर पे भी ये चीज़ें ट्राई करें। एक तरह से एक हॉबी आपकी हो जाती है, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है। And sewing is not just for girls. जी, boys can join in too. जी, मुझे याद है मेरे भाई भी करते थे हमारे कपड़ों के ऊपर, और हम बहुत इंजॉय करते थे। आप भी ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही ये सब करें, लड़के भी। It's useful to know lots of things. Whatever you can learn, it's useful to learn new things. ये बहुत आसान है और बहुत मज़े का काम है। आप डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो आप खेल सकते हैं। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग, ये भी एक हॉबी उनकी होती है। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी बहनों की हेल्प करवा सकते हैं। ओके, ये मैंने सारा सर्कल जो है वो ऐसे फोल्ड करते करते ऐसे कर दिया, ठीक है। और ऐसे इस सारे हिस्से को सेंटर में लेके आके, और मैं नीडल को जो है इसको धागे का से स्ट्रेच करके ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आए आपको समझ? और फिर इसको बिल्कुल सेंटर में इसको नीचे रख के इसकी सारी लेयर्स को जो है वो, ये जो फोल्ड्स हैं इनको बराबर करना है आपने, कि हर साइड से एक जैसे फोल्ड हुई लगे। ठीक है। अब इसी जगह पे आपने अपना फाइनल स्टिच जो है वो लगा देना, ताकि ये खुल ना जाए। आपके कोट्स के ऊपर या आपके कपड़ों के ऊपर समटाइम्स एक्स्ट्रा बटन होते हैं, या वो कोट जो ख़राब हो जाते हैं या दोबारा यूज़ नहीं हो सकते हैं, आप उनके ऊपर से बटन उतार के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक बटन जो है वो जहाँ पे आपने ये एंड हुआ है इसी के ऊपर ऐसे रख के, और आपने इसको ग्लू कर देना। बहुत सारे ईमेल्स में बच्चे कहते हैं कि आप ग्लू गन यूज़ करती हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये ज़रूरी नहीं है, जो दूसरी ग्लूज़ हैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ मैं इसलिए यूज़ करती हूँ प्रोग्राम में क्योंकि ये जल्दी ड्राई हो जाती है। ये देखिए, ठीक है।
ये कुछ हेयर पिन्स मिलती हैं, सिंपल हेयर पिन्स। आप कोई भी पिन लेके इसको खोल के आपने जो भी आपका ये है इसके पीछे आपने लगा के और आपने इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है। तो ये आपकी पिन तैयार हो गई। आप डिफरेंट कलर्स, आप इसके ऊपर और कुछ लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, आप ऊपर कुछ और लगा दो। You think they can make that? इजी है। ऐसे ये आप ऐसे डिफरेंट पेन्स आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। वो सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं MTA पर, वो भी ऐसी चीज़ें बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, ताकि हम प्रोग्राम में दिखाएं वो चीज़ें। हमें जो भी चीज़ आपने बनाई है आप उसकी तस्वीर खींच के हमें भेजें और आप हमें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा। सो ये था हमारा आज का आर्ट्स एंड क्राफ्ट का सेक्शन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें ख़त लिख सकते हैं और आप इस तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे। पोस्ट कोड है SM45PT। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप यूट्यूब की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।